Good morning, students. Now, last time we had finished up to nearest next, right? We were on the lesson adjectives. Lesson 3 adjectives, and we had reached page number 25. Now, let us read further. Nearest next. Nearest denotes distance. Next denotes position, right? Next, previous one, yeah, after, all these denotes a position. Nearest denotes distance. Who lives nearest to the school? Her house is next to mine. Next to mine यानी position बता रहा है. Nearest to school यानी distance बता रहा है कितना school से नज़दीक है. Now let us revise all these we had done earlier. Some is used for affirmative sentences. Any is used for negative sentences. Much is used for uncountables. Many is used for countables. Little is used for uncountables. Few is used for countables. Little and few are almost none, for almost none, right? A few, of a little, a few for some. Elder, eldest for family members. And older, oldest used to compare ages. Later, latest refer to time. Latter, last refer to position. Now comparatives ending in or that is, right? Senior, junior, inferior and superior are adjectives ending in or. These adjectives are followed by to and not by than. These adjectives are not followed by than despite being into superior degree, right? He is senior to me by 3 years. My pen is superior to yours. Now underline this point. This is important because despite being superior degree, right, it is not used with than. Write down both the examples. My pen is superior to yours. Write down this. And this first point also, nearest denotes distance, next denotes position. Write down both the examples so that you will understand. No need to write this because this we have already done. This is just a revision and brush up of all. Now, as, so as. As is usually used with positive statements. For example, she is as cunning as fox. Her result was as good as we had expected. जनरली कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के साथ या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ ये यूज़ होता है. In negative sentences, both as and as and so as are acceptable. For example, she is not as cunning as you think. She is not so cunning as her elder sister. Both sentences are correct, right? Write down both the sentences. In negative sentences का क्या point है वो भी लिखना है. Write down all these important points. Now, further, some adjectives represent the highest degree. They cannot be used in the comparative or superlative degree. Important adjectives of this kind are unique, chief, complete, perfect, entire, full, ideal. We cannot have anything more complete or most complete. Similarly, we cannot think of anything more perfect or most perfect. This was a unique plan. So, unique is a separate word on its own. You don't have to describe it in comparative or superlative form. You don't have to add anything to it. You can use unique itself in all the three forms, right? So such words are unique, chief, complete, perfect, entire, full, ideal. All these words are such which you need not use any other word with it to describe in a superlative degree. Now this is a brush up. No comparative or superlative degree or for these adjectives: unique, complete, perfect, full, ideal. Right? Write down this example also. Okay. Most unique plan नहीं बोलते, more unique plan नहीं बोलते. Now let us go move on to the exercise. Exercise 8. Fill in the blanks with the correct degree of the adjectives given in the brackets. Number 1. A.R. Rahman was a very dash boy. Talented is given, so we will use talented only. More talented, very more talented नहीं होता है.
This is a positive degree. There is no comparison with any other person. So talented same use होगा. Further, A.R. Rahman was dash than any other boy of his age. अब कोई भी दूसरा boy उसकी age का उसके साथ comparison हो रहा है. So talented will become more talented, right? That is the comparative degree. Third, A.R. Rahman is the dash musician today. Talented. अब ये म्यूजिशियन सारे म्यूजिशियंस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. सो वी विल यूज द सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज मोस्ट टैलेंटेड, राइट. नाउ फर्दर, द पेन इज डैश देन द स्वॉर्ड. माइटी का हमको फॉर्म यूज करना है. स्वॉर्ड और पेन के बीच में कंपैरिजन है, सो इट विल बिकम माइटियर, राइट. स्पेलिंग नोट करो, TIER करना है. फर्दर, वेरी फ्यू पीपल हैव बीन एज डैश एज गौतम. लकी, राइट. गौतम एंड दूसरे पीपल के बीच में कंपैरिजन है, सो इट इज लकीयर, राइट. कंपैरेटिव डिग्री. ओके, देन सिक्स्थ वन, दिस एक्सरसाइज इज डैश देन द वन वी डिड यस्टरडे. हमने जो कल करा था उससे ये इजी है. सो कल की हुई एक्सरसाइज और आज की एक्सरसाइज में कंपैरिजन है, सो इट इज कंपैरेटिव डिग्री, सो इट इज इजियर. देन सेवेंथ वन, ट्रेन 18 इज डैश ट्रेन ऑन दिस रूट. कंफर्टेबल. सारी ट्रेन्स के बीच में कंपैरिजन है, सो हम लोग क्या यूज करेंगे, इज द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रेन ऑन दिस रूट. ओके, देन एट्थ वन, द डैश प्रपोजल केम फ्रॉम एन असिस्टेंट. गुड का सुपरलेटिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा बिकॉज सबके बीच में मीटिंग हो रहा है, उसमें से असिस्टेंट सबसे अच्छा सुझाव दे रहा है. सो इट विल बी गुड का जो फॉर्म है, गुड बेटर बेस्ट होता है, सो बेस्ट इज द फॉर्म हियर. ओके, देन नाइन्थ वन, ऑफ दीज टू लैपटॉप्स दिस वन अपीयर्स टू बी डैश. दो लैपटॉप के बीच में कंपैरिजन है, सो इट इज कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज फास्टर. फास्ट का फास्टर. Then number 10, no other metal is so dash as iron, useful. अब no other metal and iron के बीच में comparison है, so it will remain useful only. useful का कोई usefuler नहीं होता है, या usefulest नहीं होता है, या more useful, most useful नहीं होता है. useful remains useful only. Okay, then 11th, a wise enemy is dash then a foolish friend. एनिमी और फ्रेंड के बीच में कंपैरिजन है, तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर. गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट होता है जो हमने यहाँ यूज किया ऊपर. ओके, देन नंबर 12, हल्दीराम्स इज डैश देन एनी अदर फूड जॉइंट इन द नेबरहुड. अब ओल्ड का फॉर्म यूज करना है. इट इज अ शॉप, कंपैरिजन बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इट विल बिकम ओल्डर. हल्दीराम इज older than any other food joint. किसी भी और फूड जॉइंट के बीच में कंपैरिजन है, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज 13th, his dash sister got married recently. ओल्ड. ओल्ड का हो जाएगा एल्डर सिस्टर, बिकॉज यहाँ हम पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. जब पर्सन्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं एज में, तो हम लोग एल्डर यूज करते हैं, ओल्ड का ओल्डर नहीं होता है. यहाँ पे ओल्डर नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कंपैरिजन है और टाइम के रिलेटेड है, दैट इज व्हाई वी यूज ओल्डर हियर. ओके, सो हियर इट विल बिकम एल्डर. हिज एल्डर सिस्टर गॉट मैरिड यस्टरडे. ओके, नाउ 14th वन, विच एनिमल इज सपोज टू बी द डैश कनिंग. सपोज टू बी, सारे एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन हो रही है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे मोस्ट कनिंग. इज सपोज टू बी मोस्ट कनिंग. कनिंग हमको ऑलरेडी दिया है. And the last one is dash customers turned up at the sale when we expected. Few. Few का हो जाएगा fewer, यानी जितने एक्सपेक्ट किए थे उससे कम आए, तो fewer हो जाएगा. Fewer customers turned up at the sale than we expected. Now this is just a grammar brush up. Just go through it, read it, and then we will start with articles the next lesson. Now we shall start your English textbook, right? Your Gujarat board textbook, GACB.
Now this is your Gujarat board textbook that we are supposed to do this year, right? We will start the first lesson in it, that is unit 1, exploring the symbols. Now let us read. It is about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1961. He is the poet who wrote India's national anthem, right? You must be aware which is the national anthem. Jana Gana Mana was written by Rabindranath Tagore, and he won the Nobel Prize in Literature in 1913. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old, and he published his first poem when he was only 16. Right? When he was only 16, he published his first poem. Underline published. Let us start doing the words also along with it. Calcutta. Calcutta, which is now known as Kolkata. Right? Okay. Wrote India's national anthem. Then Nobel Prize in Literature. Literature means English, stories and all. He started to write poetry yani poems, when he was 8 years old, and he published his first poem when he was only 16. For this, Tagore did not use his real name. He used a pen name, Bhanu Simha. Bhanu Simha matlab meant sun lion, right? He didn't used to write down his entire name Rabindranath Tagore after the poem that he has written. He used to write this name Bhanu Sinha. जब कुछ लोग, कुछ राइटर्स जो होते हैं वो अपना नेम चेंज करते हैं अपनी पोएट्री और अपने स्टोरीज के साथ, दे डोंट राइट देयर रियल नेम, दे राइट देयर पेन नेम. इट इज कॉल्ड देयर पेन नेम, राइट? सो दिस वे Rabindranath Tagore's pen name was Bhanu Simha. If you publish a story or poem, what pen name would you choose? You can make your name as silly or as serious as you wish. You can do it on your own now, this one. What pen name you would suggest for yourself if you write a story. Now share your pen name with your classmates. Fill in the chart with the interesting pen names you hear in your class. You can share it with your cousins now, right? Because classmates, if you are in touch, it is okay. You can fill it otherwise. Of all the new pen names you heard in your classroom, which pen name did you think was most interesting? कौन सा पेन नेम आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आपके अपने में या किसी और का जो सुना है उसके बारे में आपको लिखना है. नाउ दिस इज ऑल ओपिनियन बेस्ड, सो you do it on your own. Now let us move on to activity 2. Read the poem carefully to yourself. Mark any word that you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who may help you understand each word and idea in the poem. Now let us read the poem. Where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high. Underline held. Where knowledge is free. Where the world has not been, underline knowledge here. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Narrow अंडरलाइन करो, डोमेस्टिक अंडरलाइन करो. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी नैरो माइंडेडनेस, थिंकिंग, कास्ट, क्रीड की वजह से जहाँ पे वॉल्स बांधी नहीं गई है एक दूसरे के बीच में. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. वर्ड्स कहाँ से आते हैं? ट्रूथ में से, यानी सच्चाई से, दिल से, राइट? डेप्थ को अंडरलाइन करो यानी गहराई. डेप्थ का मतलब है where tireless striving stretches its arms. tireless striving, tireless मतलब बिना थके आप कुछ नया सीखने का ट्राई करते हो, वो स्ट्रेच होता है आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, और परफेक्ट होने का कोशिश करते हो किसी भी चीज़ में. where the clear stream of reason, underline stream, has not lost its way into the dreary. स्ट्रीम मतलब झरना, और ऑफ रीज़न, किसका? रीज़न यानी जो रीज़न करने की, हमारी एनालाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो. हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे टू ड्रीयरी डेजर्ट सैंड.
ड्रियरी यानी कहीं खो नहीं गया है, डेजर्ट जैसे में, रन में. सैंड ऑफ डेड हैबिट, गंदी आदतों में खो नहीं गया है, राइट. डेड हैबिट्स, ओके. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी यानी आप खुद, यू. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. Ever widening thought and action मतलब जहाँ आपको, और भगवान रास्ता दिखाता है कि आप अच्छे थॉट्स सोचो और एक्शंस लो. Into the heaven of freedom, my father, let my country awake. Into the heaven यानी स्वर्ग, of freedom, freedom यानी स्वतंत्रता. माई फादर, लेट माई कंट्री अवेक. ऐसे फ्रीडम में, ऐसे स्वर्ग में मेरी कंट्री को जागने दो, मेरी कंट्री को रहने दो. मतलब ऐसा फ्रीडम मेरी कंट्री में आना चाहिए कि हर किसी को अपने अच्छे थॉट सोचने की परमिशन है, राइट. दैट वे. सो राइट डाउन ऑल दीज अंडरलाइन वर्ड्स. I have mostly explained you the meanings of everything, all the words, right? Write down these hard words, and over here also, which we have underlined, literature, poetry, published, all that also. So take all the words and write down one time in your notebook as lesson 1 of your textbook. Now further exercises we will start next time. We stop here today.